Hello student. Now this is last type 5 for fraction, partial fraction. Okay. Now in type 5, 1 upon x square plus a square into x square plus b square. That means we can't factorize x square plus a square as well as x square plus b square. Okay. So we can write in this way, since the power of variable is 2, power of variable is 2. So we have to use two constant for x square plus a square and two constants for x square plus b square. Clear? Now take one example. 1 upon x square plus 2 x square minus 3. So this is the example. Okay. 1 upon x square plus 2 x square minus 3. Okay. So the question is related to type 5. In type 5, so we have to write in this way, ax plus b upon x square plus 2 plus cx plus d upon x square minus 3. This is equation number 1. Clear? Now, method is same as type 4, taking LCM, simple multiplication, and then compare the coefficient of x square, x constant, both the side. Method is same. So LCM is x square plus 2 x square minus 3, right? 1 upon x square plus 2 x square minus 3. Clear? So ax plus b in bracket and in another bracket x square minus 3 plus cx plus d in bracket, in another bracket x square plus 2. Clear? Now cancel. So 1 is equal to simple multiplication, multiply by ax in x square and minus 3. So we have ax cube minus 3ax. Clear? Now multiply by b plus b, bx square minus 3b plus, now multiply by cx. So cx cube plus 2cx plus, now multiply by d, dx square plus 2d. Clear? So 1 is equal to, now the highest power of variable is 3 and there are two terms which are related to the highest power of variable, which is 3. So taking x cube as common, so inside a plus c, right? Now taking x square as common, this is x square and where is x square? Yes, this one. Okay. So take x square as common. Okay. So inside b plus d, this is b and this is d, b plus d. Clear? Now take x as common, this is x, so plus x as common. So we have minus 3a plus 2c, minus 3a plus 2c, and at last constant value. Now constant values are minus 3b plus 2d. Clear? So compare the
coefficients of x cube, x square, x and constant. Okay, and constant. Okay, coefficient of x cube is a plus c is equal to 0. Equation number second. See, because in left hand side there is no x cube term, so its coefficient is already 0. So we have a plus c as 0. Now second term x square, whose coefficient is b plus d. So write b plus d, right? In left hand side there is no x term, x square term. That means its coefficient is also 0. Third equation, coefficient of x is minus 3a plus 2c. So minus 3a plus 2c. In left hand side, whether the coefficient of x, the term which is related to x, no. So its coefficient is 0. Right? And at last, this is constant value. In left hand side, whether there is a constant value, yes, and that is 1. So minus 3b plus 2d is equal to 1. This is equation number 5. Now I told you that now in this question we use how many constants? A, B, C, D. So there should be 4 equations in the form of A, B, C, D. मतलब जितने कांस्टेंट आप यूज करोगे उतने इक्वेशंस हमें यहाँ फाइंड होंगे. ओके, क्लियर? नाउ इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 आर रिलेटेड टू A and C. Equation 3rd and equation 5th are related to B and D. So with the help of 2nd and 4th, we can easily find the value of A and C. And by 3rd and 5th, we can easily find the value of B and D. Clear? So, by 2nd and 4th. By 2nd and 4th. Now see beta. A plus C is equal to 0. Then A is equal to minus C. Now put the value of A is equal to minus C in equation number 4. So put A as minus C. So minus 3 into minus C plus 2c is equal to 0. So minus minus plus 3c plus 2c is equal to 0. 5c is equal to 0. So c is equal to 0. Clear? Now you see. Again see equation number 2 and equation number 4. The equations are a plus c is equal to 0. That means there is no constant value. Also, in equation number 4, minus 3a plus 2c is equal to 0. That means no constant. That means in both the equations, there are no constant. That means it is clear that the values of A and C are 0. Okay. So we got C is equal to 0. Or we can write directly by equation 2, by equation number 4, A is equal to 0, C is equal to 0, right? Or by 2nd and 4th, you can write A is equal to 0, C is equal to 0. Clear? Now, see the equation number 3rd and 5th.
there is no constant, but in equation number 5 there is constant value which is 1, so they are not equal to 0. So by third and fifth, see, b plus d is equal to 0, so b is equal to minus d. b is equal to minus d, put it on equation number 5, so put b as minus d, so minus 3 in bracket, minus d plus 2d is equal to 1, so minus minus plus 3d plus 2d is equal to 1, 3d plus 2d 5d, 5d is equal to 1, hence d is equal to 1 upon 5. Clear? Now we have to find the value of b. So by third, b is equal to minus d, b plus d is equal to 0, then b is equal to minus d. Now put the value of d as 1 upon 5, right? So we have a, b, c and d. Now put it on equation number 1. So see, by first 1 upon x square plus 2 into x square minus 3 is equal to, the value of a is 0, so 0 into x 0. Only we have b, the value of b is minus 1 upon 5, so we have minus 1 upon 5, 0 minus 1 upon 5 upon x square plus 2 plus the value cx plus d, the value of c is 0, so 0 into x 0, and the value of d is 1 upon 5, so 1 upon 5 upon x square minus 3. Okay, so shifting this 5, so the answer is minus 1 upon 5 x square plus 2 plus 1 upon 5 x square minus 3. Now we can take 5 as common to get the answer. ओके, सो हमें 4 इक्वेशन मिले थे, इन 4 इक्वेशन में हमने जो कंपैरिजन किया उससे हमें 4 इक्वेशन मिले, 2 इक्वेशन ए और सी से रिलेटेड थे और 2 इक्वेशन बी और डी से रिलेटेड थे. तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 पे गौर कीजिए, ये हम अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हैं लेस. ओके, सो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 3a प्लस सी माइनस 3a प्लस 2c इज इक्वल टू 0. यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू दिख रही क्या? नहीं. इसका ये मतलब है कि इन दोनों का वैल्यू कितना आने वाला है? 0. राइट, ये हमेशा रखना. अब b a प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस 3a प्लस 2c इज इक्वल टू 0, इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो भी इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 ही आएगा. तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, यहाँ देखिए ये कोफिशिएंट होते हैं और ये यहाँ क्या है? कांस्टेंट. अगर ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ नहीं है तो इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा 0. राइट. अब इक्वेशन 3 और 4 देखते हैं, दोनों किससे रिलेटेड हैं? बी और डी से. b प्लस डी इज इक्वल टू क्या है? 0. कांस्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है. कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 1. इसका क्या मतलब है? b और d का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा. तो हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं या d का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो b का वैल्यू क्या आया? माइनस d. इसको कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 5 में. तो इससे हमने किसका वैल्यू फाइंड कर लिया? यहाँ रखा हमने. इससे d का वैल्यू कितना आया? 1/5. और इस d का वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 3 में. तो उससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? b की. तो इक्वेशन 3 में क्या है? b प्लस डी इज इक्वल टू 0. तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस d. और यहाँ पे हमने d का मान 1/5 रख दिया.
तो इस प्रकार से हमें ए, बी, सी और डी का वैल्यू मिल गया और इसको हमने कहाँ रख दिया, इक्वेशन नंबर 1 में। मतलब ये देखो बाय 1 और यहाँ पे हमने वैल्यूज रखी सबकी, 0 माइनस 1/5 आया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 0 प्लस 1/5 आया अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3। फिर ये 1/5 क्या हो गया, मतलब 5 क्या हो गया, शिफ्ट हो गया और ये आ गया माइनस 1/5 प्लस 1/5। आप यहाँ से 5 क्या ले सकते हैं, कॉमन। पहले इसको लिखना प्लस वाली टर्म को और बाद में माइनस वाली टर्म को, राइट। सो वी कंप्लीट ऑल टाइप्स which is related to partial fraction. Okay, thank you.